Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here for daily news analysis and I hope कि आप सारे अच्छे होंगे. You guys are doing well and welcome to another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And in this news analysis, what exactly we discuss? We majorly discuss the Hindu and Indian Express, and apart from that we also discuss about any important government website and PIB, which is Press Information Bureau. And what exactly we discuss in daily news analysis? We discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, person news, and we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments and bills which is in the parliament that we also discuss. This is very important, especially for the law entrance exam. So कैसे हैं आप सब? I hope सारे अच्छे होंगे, right? Please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible to everyone? Yeah. Chalo. So as you know that just a second. So in short, like जो न्यूज़पेपर है आपका, why it is important? Because it gives you an information like कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए. And newspaper is gives you an immense idea कि like what things that you should keep an eye on that and what are the important takeaways. और आज की important main जो आपका न्यूज़ है वो है basically म्यांमार के ऊपर and the role of governor. And here is the quote of the day that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. So my name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here. And we have taken initiative questions of the day. So we'll ask you the 5 questions that gives you an immense idea कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें फोकस रखनी चाहिए और एक न्यूज़ पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये आपके सामने है क्विक टिप्स जो हम डिस्कस करेंगे. क्विक टिप्स में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स विल डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक. और ये हमारा वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर. जब भी आपके सामने इस टाइप के आर्टिकल्स हो, मेक श्योर व्हाट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. Like what are the options before a governor when they receive a bill for assent from the state legislature assembly? Do governors have powers of discretion and when can they use it? What have been the recommendation of the Sarkaria and Panchi Commission? ये 2 कमीशन की रिपोर्ट आई थी एंड ये दोनों कमीशन की रिपोर्ट थी दैट इज बेसिकली फॉर द सेंट्रल स्टेट रिलेशन. रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नर है RN रवि, जो आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? RN रवि. सो रवि साहब ने दैट withheld accent for the certain bills that is passed by Tamil Nadu legislature assembly. This follow the Supreme Court expression like serious concern over inaction by the government on bills presented for his accent. So the court expressed the displeasure on the similar delays by the governors of Telangana, Punjab and Kerala. Most of the states are not BJP ruling. What does the constitution say? You should know about the constitution provision before that, like what the constitution say about the bill which is passed in the state legislative assembly. बात करें हम article 200 की, which is very important to understand. Article 200, what it talks about? Article 200 of the constitution that lays down when the bill passed by a state legislature that is presented to the governor for their assent, they have 4 alternatives. अभी 200 में 4 alternatives क्या क्या है तो वो जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला ये कि लाइक जो भी बिल है दैट मे गिव एक्सेंट टू द बिल and may withhold accent to the bill and reject the bill, in which case the bill falls by becomes law that may return to the bill. In case of money bill उसको रिटर्न करने की अथॉरिटी नहीं है. And for consideration of the state legislature or may reserve the bill for the consideration of the president as held by the Supreme Court in the various cases including the like शमशेर सिंह जो 1974 में केस हुआ था वो 4 चीज़ें. तो शमशेर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी?
the governor does not exercise their discretionary power while withholding accent or returning a bill in the state legislature. Right? और दूसरी ये थी कि they are required to act as per the advice of the council of minister. और my friend, स्टेट में आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं चीफ मिनिस्टर, राइट. बट अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर की, तो सेंटर में आपके कौन होते हैं? वो आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. So they are required to act as per the advice of the Council of Minister, and the situation of withholding action that may rise in case of private members bill, कोई member of the state legislature other than a minister that is passed Council of Minister that do not want to be enacted into a law. In such an instance that they would advise the governor to withhold accent. However, this is an unlikely scenario as the Council of Ministers who enjoy a majority in the Legislative Assembly would not allow the passage of such a bill. Or secondly, if the incumbent government जिनकी bill है that has been passed by the legislature falls or resign before it is accented to by the governor or new councils that may advise the governor. So the return of any bill to state legislature for recommendation is also to be done based on ministerial advice. So the governor जो है वो must reserve certain bill like those which reduce the power of the High Court and for the consideration of the President. And you should know about they maybe also reserve bills on concurrent list, because as we know that we have 4 lists. One is state list where state have a sovereign power to make a laws on that, and center list, and third one is concurrent list, and fourth one is the residue list. So in the concurrent list, both state and center have a power to make a law on that. So in that regard, you should know about what were the recommendation. सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी हमारे पास सामने, आपको ये समझना होगा, दैट इज सरकारीय कमीशन. ये सरकारी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सरकारी कमीशन की रिपोर्ट थी 1987 में, दैट हैज सबमिटेड दैट इट इज ओनली द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट टू अंडर रेयर केस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनली that can be implied as the discretionary power of the governor save in such exceptional cases. और आर्टिकल 200 आपका क्या कहता है? As per the advice of ministers, it further recommendation that the president should dispose of such bills within a maximum period of 6 months. और ये 6 month तक की पीरियड ही रख सकते हैं. उसके बाद हमारे सामने आए पंची साहब, इन्होंने एक रिपोर्ट दी, पंची कमीशन की रिपोर्ट आई 2010 में, और उनमें उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि दैट गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर देयर एक्सेंट विद अ पीरियड ऑफ 6 months. सेम मतलब अगर देखें तो पंची कमीशन और सरकारी कमीशन की रिपोर्ट समहाउ सेम थी. सो दीज रिकमेंडेशन हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट. बट अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट है? हाउ कैन दिस इम्पास बी रिजॉल्व? As the Supreme Court observed, it is necessary for the governors and chief ministers to do a little bit of soul searching. The Constitution may be amended to provide that the chief ministers shall be consulted before appointment of the governors, and the recommendation of the Panchi Commission that governor may be removed through an impeachment by the state legislature that can also be considered. And this would arm the state legislature with the power to remove an uncooperative governor. This is all about the crux of the passes. You should know about the important takeaways. What are the constitution provision, that is Article 200. What is the clashes going on Tamil Nadu government and majorly the Telangana, Punjab and Kerala, that there is a clashes of governor with the respect of reserve the bill, and what are the concern about the Article 200 and Sarkari Commission and Panchi Commission की report. Sarkari Commission की report I think in the year of 1987 and Panchi Commission reported in the year of 2010 that recommended governor should be taken a decision that with the respect to a bill presented for their accent for the period of maximum of 6 months. So this is the important takeaways that you should remember. And here we are, the next article, APEC. What is APEC is, that is called Asia Pacific Economic Cooperation. So what is APEC is? Basically is a group of meeting
and San Francisco for the leaders week that began on November 11 that will conclude with the economic leaders retreat on Friday. APEC क्या है? सबसे पहले आपको ये समझने हुई इन शॉर्ट द मेजर पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट. APEC एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, दैट इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम and that was established in the year of 1989 with a stated aim to leverage that the growing interdependence of the Asia Pacific and that create greater prosperity for the people of the region. And इसमें कितने members हैं? How many members? That members is 21. So there are around 21 members of APEC that call known to be economies. So rather than countries or member states, because trade and economic issues are the focus of grouping. So Taiwan and Hong Kong that attend APEC meeting as distinct entities, that even though China said that as a part of China. So APEC जो economies है उसमें आपकी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हांगकॉन्ग है, हांगकॉन्ग नॉट एग्जैक्टली बिकॉज वो पार्ट है चाइना का, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ये सारे. चाइना भी है उसमें, जापान भी है. APEC का रोल क्या है? सो इसमें मेजर जो है मेन पर्पस दैट इज टॉकिंग अबाउट इज फ्री ट्रेड एंड लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ्स, दैट इज लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ्स को कम करना, जिससे दोनों देशों में जो एक बायलैटरल ट्रेड है उसको प्रमोट कर सके. एंड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू द US स्टेट डिपार्टमेंट, सो फर्स्ट जो 5 years थे ऑफ द ऑपरेशन, सो इसीलिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये 5 चीज़ें थी APEC को. 1991 में एक सियोल डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें कि APEC के जितने मेंबर्स थे उनको इकोनॉमीज प्रोक्लेम किया. और अपनी कंट्री की बात करें, सो इंडिया मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन APEC इन द ईयर ऑफ 1991. 2016 में द न्यू मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी थी, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया था रिक्वेस्ट टू ज्वाइन was based on India's geographical location. चलिए, why the people fleeing Myanmar for Mizoram? कुछ सिमिलर आर्टिकल्स हमने कल देखी थी आपके सामने, और ये थी आर्टिकल्स ये इसमें आप देखोगे सिमिलर आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी. या तो जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आर्टिकल्स में क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए. या so what is happening in the border state of the northeast because of civil war in the neighboring country? Second thing that you should know, how have ethnic organization responded to the Janta crackdown, and how has China reacted to the hostilities? The 3 major points आपको याद रखनी है, ठीक है. So to understanding the topic, in order to complete the current affairs, in order to complete develop the understanding about the topic. So Myanmar जो है that has been a flames ever since the military seized power on February 1st, 2021 में. Military coup जिसे हम कहते हैं, that is known to be a military coup. The day the new parliament elected after the November 2020 elections that was convened, वहाँ की ethnic armed organization that has joined armed civilian group they call People Defense Force PDF, and that is allied with the country's self-declared nation unity government in exile that took on the military. So over the past week, जो resistance force थे that have captured 2 towns close to the India-Myanmar border after fierce fighting, and the fall of this latter required that result of influx of 5,000 refugees into Mizoram. So in a spillover on the civil war in the Myanmar, more than 1,500 nationals of Indian citizens in a neighboring country took refuge in the Mizoram Champal district early this morning. So what is the situation in Myanmar? So in short, अगर समझने की कोशिश करें, जो Brotherhood Alliance है that attack on Janta since late October that had changed the equation, increasing the number of battlefield in the Janta and stretching in this thing. So the attack in Chin state coincidentally followed a major coordinated attack on the regime force by the 3 ethnic armed group. और ये ethnic armed group का नाम क्या है? Myanmar National Democratic Alliance Army, MNDA, जिनका मेन इनमें रोल है. दूसरा अपना जो है वो है आपका TNLA, the Tarang National Liberation Army, and the Arakan Army, which is AA in Myanmar, North Shah state जो है that is abutting China. So the coordinated attacks terms Operation 1027.
इसका नाम रखा उन्होंने ऑपरेशन 1027। सो व्हाट लेड टू द करंट सिविल वॉर? फेब 2021 में न्यू जनता द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल that was dominated by the Myanmar armed force, that is organized a military coup that ousted the civilian National League for Democratic Government and detained its leader Aung San Suu Kyi। ये कहानी थी यहाँ की। फरवरी 2021 के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन एंड हाउ डिड द करंट राउंड ऑफ फाइटिंग बिगिन? ये अक्टूबर 27 को सरप्राइज अटैक होती है यहाँ पे इन द Shan state in North Myanmar along with the border with China by three Brotherhood Alliance front of three EOS, Myanmar National Democratic Alliance Army, Tang National Liberation Army। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो क्वाइट सिमिलर है इसमें, और MNDA का ये सिमिलर आर्टिकल्स जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इसमें। एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, Edinburgh to Kozhikode, how Kerala got onto UNESCO City of Literature list, home to some India's best known writers including M.T. Vasudev Nair, Vaikom Muhammad Bashir and S.K. Potekar। The city also has a vibrant theatre tradition, बहुत सारे publishing houses हैं, बहुत सारे libraries हैं and bookshops and hosts the popular Kerala Literature Festival। So over 4 days in the coming month of January, the Kozhikode beach will witness a sea of people braving the blazing sun to listen to some great minds from across the country and overseas speaking mostly on literature। And the 7th edition of the Kerala Literature Festival, जिसको हम कहते हैं KLF, that should attract hundreds of thousands of books lovers as in previous year। It will be the first since UNESCO named Kozhikode a city of literature। ये है कहाँ पे my friends? Kozhikode। यहाँ पे I am भी है, I am Kozhikode। So केरला में है ये एंड इसे नाम दिया गया सिटी ऑफ लिटरेचर। सो जो कोझिकोडे है इंडिया का फर्स्ट सिटी है ऑफ लिटरेचर। इट वाज इन 2004 द यूनेस्को लॉन्च अ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटी दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड एडिनबर्ग वाज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। इनिशियली एडिनबर्ग था, कोझिकोडे नहीं थी, ठीक है। This year, Gwalior has been named a city of music, an honor that was achieved before by two other Indian cities। वाराणसी को 2015 में मिला था ये अवार्ड and चेन्नई 2017 में, and city has submitted a bid explaining why it deserved to be considered। Master storytellers हैं Kozhikode is the home of one of the greatest writers our time, M.T. Vasudev Nair, and it was home of the another much loved legendary author Vaikom Muhammad Bashir, right? So Marquis was once called the greatest novelist in Malayalam। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्विक टिप्स के बारे में, और आज से क्विक टिप्स है आपका सार्क कंट्रीज़ के बारे में, हाउ टू लर्न। सो इसमें आपका MBBS स्पेन, M फॉर मालदीव्स, B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया एंड नेपाल। ये सारे आप लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स। एंड ये साहब है, ये साहब क्या है? स्टेट इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम और बंगाल। ये सारे आपके स्टेट्स हैं वेयर इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद द भूटान। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। और आज आपके कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं थे क्योंकि बहुत सारे ऐड दिया हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के ऊपर चीज़ें थी दी हुई। सो इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं थे उसमें। चलिए, सो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो माय फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। So according to the International Energy Agency, India is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades. However, India's industrial sector that will emit 30% less CO2 by 2030. Second question देखते हैं, और ये आपका अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट जो है, अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच वन? नीति आयोग, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन।
और ये है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ ICCR that has recognized 6 Indian restaurants worldwide for promoting Indian culinary tradition. This annual program acknowledges restaurants contributing to India's cultural cause through cuisine on a global scale. Next is the Bureau of Indian Standard, that is working under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Home Affairs. और इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। BIS को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 में, एंड which implemented on October 12, 2017. Which substance is commonly used in cloud seeding? और many times we have discussed in cloud seeding, तो ये आपका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। B is the right answer. And silver iodide एक common substance है that is used in cloud seeding. When released into a cloud, silver iodide particles provide a surface for ice crystal to form around, and this process is intended to modify the cloud microphysical property and potentially enhance precipitation. और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड नन ऑफ द अबव। तो ये आपका राइट आंसर है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को ऑथराइज करता है SEI, विच इज स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट। कमेंट सेक्शन में कोई बताओ कि स्टॉकहोम कहाँ पे है। यहाँ पे कन्वेंशन भी हुआ था एनवायरमेंट के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो आप कोई बताने की है कहाँ पे है। क्लाइमेट एनालिस्ट ये जो है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करना था। प्रोडक्शन गैप मतलब दैट क्वान्टिफाइज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ऑयल, गैस। So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot, and we'll meet you tomorrow for the same time. Until then, bye bye and take care. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. और CLAT की मैराथन सेशन आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा मिलेगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स आपको इसे ज्वाइन करना है, राइट? And thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye bye and take care.